let's move with this. We are here. First of all, we should run one more command, that is export plus cd and we say here find that. cd 11gr2 grid ll grid ll run install. सबसे पहले हम grid इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, ठीक है. फर्स्ट स्टेप इज टू इंस्टॉल grid. You will go with install and configure grid infrastructure for a standalone server. If you want to go for an RAC, 11G RAC, will go with the top one. But we are not going with RAC, we will go with the second one. English language will be chosen up. We'll go with data, and then we'll change. Then we will go with 1, 2, 3, 4. These are my ASM disks I have, right? And I'm making a data disk group with 4 of the disk groups, and I'll say next, and I will specify the ASM password who will be managing my ASM storage. That is, keep it as Oracle ORACLE. Yes. Then it's better to go with the grouping of all the 3 as a DBA. If you want that everyone should have their own responsibilities, we can have define different user group. For simplicity, we can go for the creation of all the DBAs groups together for all the things. This is the place where it will be installing the grid. It's U01 app Oracle product 11.2.0 grid, which I have just created. This is the place where with my Aura inventory will be created. The prerequisite checks. It's done. The swap size is a little bit low, so let us ignore that. What expected value is 4 GB, what is 3 GB, it's 1 GB less. It doesn't make an issue in this laptop, but it can make an issue in the servers. So right now I can just ignore that. So this is installation of my grid is going up. First of all, we will install grid, then we will install the database. Okay. इसके बाद मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, जैसे 2-3 मेरे पास सिस्टम है अगर, तो मैं अपने से ग्रिड इंस्टॉल कर लूँ और बाकी वहाँ पे इंस्टेंस इनिशिएट हो सकता है कि मेरे पे सर्वर, मैं इसको एज ए सर्वर ट्रीट करूँ, बाकी चीज़ें को नॉर्मल इंस्टेंशिएट करके उस तरीके से काम करूँ. If you are thinking to configure an RAC, that is not the way of creating an RAC. Okay. That is something totally different. Grid is something different. Grid in this 11G, the basic purpose of grid is to have a feature of Oracle restart. And in 11G, what they have done, they have clubbed the ASM group with the grid home. Okay. Right? So that is ASM home and grid home are being clubbed together. In previous scenarios in 10G, the ASM home was with the database home or a different, but now grid and ASM will be together. And they have come up with a feature of Oracle restart, which is the same feature as what we have in the RAC, which is being supported by the CRS, the cluster where to up and down the clusters. We have the same feature in 11G, which is to make your database up and running without your initialization. You can make the database up and down. Even if any of your processes is killed, it will automatically start those processes. That's what Oracle restart is all about, right? That feature is provided by ClusterWare in RAC. The same feature is provided by Oracle Restart in with this grid. And we have this utility called SRV CTL
from which you can start up your database, you can start up your ASM listeners, you can start up your listeners. So SRVCTL will run from grid home, in which you can manage the grid as well as the ASMs, and there will be different from where it will be the Oracle home, Oracle binaries will be stored there. From there you can start up the database manually as per this command. इनपुट आउटपुट कंट्रोलर जैसा कहते हैं ना कि वही डिसाइड करता है कि किस पे राइट करना है कैसे करना है दिस कंट्रोलर जो होता है दैट इज समथिंग सॉफ्टवेयर पार्ट और हार्डवेयर। तो अलग अलग डिस्क पे कैसे कर सकता है हर डिस्क का तो अपना राइट हेड होता है हेडर होता है उसका डिस्क वो तो डिस्क पे लिखने के लिए हेडर्स होते हैं, बट दीज आर कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रलाइज्ड डिस्क कंट्रोलर। डेटा आ रहा है, डेटा विल कम टू दिस कंट्रोलर, दिस कंट्रोलर विल डिसाइड whether it should go to this part or this part, whether it should be divided into half of parts, whether it should be mirrored. It is a work of this controller to decide. It is settings which you set at this controller or a storage level. इसको हम अलग से लगाते हैं तो दिस कंट्रोलर तो हमें पहले से लगा हुआ है दिस कंट्रोल दिस में लगाया है दिस कंट्रोलर उसके अंदर ही आता है, दिस कंट्रोल लेना पड़ता है आपको। You have to purchase the software with the hardware part, उसमें दिस कंट्रोल मिलेगा, वो कंट्रोल करेगा उसको। ये कुछ चीजें ऐसी अगर देखनी है तो हाँ, see these are the things which are the part of the storage team, वो भी आप एक्सेस करोगे नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने कभी देखा हुआ है, then you can imagine it easily what the plus point is this. If you have seen the servers, if you have seen the storages, if you have seen the system, if you have seen the networks, आप imagine कर सकते हो कैसे यार RJ45 क्या है, अच्छा कैसे वहाँ से डेटा आ रहा होता है, किसके थ्रू आ रहा होता है, सर्वर्स क्या होते हैं, कैसे वर्चुअलाइज हो रहा होता है, तो वो सब चीजें तभी आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हो जब आपने उसको देखा हुआ होता है। जब चीजें देखी नहीं है, यू हैव टू जस्ट इमेजिन, एंड आप क्या इमेजिन कर रहे हो इट कैन बी टोटली वेग आल्सो, है ना। तो वही इश्यूज देखने कैसे कहां से कर देगा मैं वो तो इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप फेक इंटरव्यू दे रहे हो, इट्स नॉट द पर्सन हु हैज बीन वर्किंग ऑन दिस, तो या तो आपको अपने किसी दोस्त से हेल्प लेनी पड़ेगी जो काम कर रहा है ताकि वो आपको दिखा सके। आपके पास मेरे पास अलग अलग क्लाइंट्स पे है डेटा, वहां से कैसे आएगा ये है। मैं सर्वर दिखा सकता हूँ आपको, बट उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? खड़े हो सर्वर ऊपर रखे, आई कैन शो यू दोस सर्वर्स अंदर भी जब आओगे तो प्राइस लिस्ट होती है, ओनली these people can go in, so and that is a work, actually a work of network team। अगर आप नेटवर्क टीम पर बैठोगे नहीं, you won't be able to even learn that much। यहाँ पर जो मेरी हेल्प होती है नेटवर्क टीम मेरी या सब सिस्टम टीम मेरे को कभी दे देती है। I just make a request, I need an OVM machine as we are talking about right now, I will request them, I need 6 machines for it, they will generate a 6 machines for me। I need a centralized storage system, they will give me the storage system, मेरे को तो स्टोरेज चलाना है, that is my work as a DBA। सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम चाहिए तो वो समझ जाएंगे उन्हें कि आप क्या मांग रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, they know how does it's their duty to know how does centralized storage system has an RAC, उन्होंने पढ़ा हुआ है, स्टोरेज वाले को पता है कि स्टोरेज सिस्टम की हेल्प कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, वो है।
Now I will be executing these two scripts as a root user. So open terminal. As a root user, just copy the same script as Visual app or inventory or inst2.sh. And the second root script is Visual app Oracle product 10.11.2.0, then grid and root.sh. Don't press OK before the script is being executed. Wait for them and then press OK. Right now we can see that OHAS is being started up. This is the only this is what we have been talking about as an Oracle High Availability Service, which will be actually responsible for the clusterware or the Oracle Restart feature. Okay, so it was successful. We will press OK. We will just close this window. Let the Oracle Net Configuration System start up. At this time, it will be starting the ASM listeners and all sort of things. संदीप जी का एक क्वेश्चन था, ये जानना चाह रहे थे कि अगर मेरा डेटाबेस क्रैश होता है तो हम रिकवरी कर लेते हैं आरमन में, लेकिन अगर इन केस ओएस ही क्रैश होता है तो क्या होगा? वो भी कर लो, पहले ओएस रिकवर होगा फिर बाद में डेटाबेस रिकवर होगा. ओके, या फिर मैं ओएस दोबारा इंस्टॉल कर लूं और फिर It's not your duty. It's the work of an OS team. It's the work of a system team to recover their system first. तो वो तभी सिस्टम उन्होंने रिकवर कर दिया, then you will come up into picture and you will recover the as it was the database crash. Many times it's possible. If the OS crashed, they bring it up to the same state. But yeah, you can even recover it. It doesn't matter. तो वो भी आरमन के थ्रू ही होगा. और क्या? एंड सेकेंडली अभी वो ये कह रहे थे कि अभी जब हम आरमन यूज करते हैं तो आरमन प्रॉम्प्ट से करते हैं, तो कहते क्या मैं एक ही से क्या मैं कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकता हूँ? So we have just completed the successful installation of the grid. You can close it. Before this also I can just show you something that we will be using the ASM CMA utility. So before this, let me do this.